Hello beautiful people and welcome to my channel Learning is Fun. So without wasting time, let's start our video. But before we begin, consider subscribing and hitting the like button. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे speech marks. In this lesson we are going to discuss the use of quotation marks or speech marks. Before we look at speech marks, let's give a quick review to direct and indirect speech. Direct और indirect speech क्या होते हैं? Indirect speech tells us the idea of what someone said. The exact words are not given. For example, he said he had arrived before you. यहाँ हमें exact words नहीं पता है कि उसने क्या कहा है. While the direct speech tells us the exact words someone said. We use direct speech when we simply repeat what someone says by putting the phrases in between the speech marks. डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स किसी ने कहे होते हैं वो एग्जैक्टली हम उन्हें सेम टू सेम वर्ड्स में ही डिलीवर कर देते हैं आगे. फॉर एग्जांपल, ही सेड आई अराइव्ड बिफोर यू. यहाँ आई अराइव्ड बिफोर यू डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि किसी ने जो हमें बताया है वही हमने आगे बता दिया है. डायरेक्ट स्पीच इज़ कॉमनली यूज्ड इन कॉमिक्स बाय शोइंग स्पीच बबल्स. आपने कॉमिक्स में भी देखा होगा कि कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर जो स्पीच बबल्स शो किए जाते हैं ताकि पता चले कौन सा कैरेक्टर कौन सी बात कह रहा है. इन नरेटिव्स, रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स स्पीच बबल्स आर नॉट यूज्ड. इसमें हम स्पीच बबल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि स्पीच मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है. स्पीच मार्क्स आर ऑल्सो नोन एज कोटेशन मार्क्स. स्पीच मार्क्स को हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं. Direct speech can go at the beginning or at the end of the sentence. हमारे sentences direct speech से start भी हो सकते हैं या फिर end पे भी हमारा sentence के direct speech आ सकता है. For example, let's go to the market said Ali. चलो market चलते हैं, अली ने कहा. तो यहाँ let's go to the market is known as direct speech. A comma separates the direct speech from the person talking. डायरेक्ट स्पीच को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. इफ़ द सेंटेंस begins with the direct speech, then the comma must be placed in between the speech marks. Or if the direct speech is at the end of the sentence, then the comma must come before the speech marks. Where direct speech ends a sentence, the full stop is placed inside the speech marks. जहाँ भी डायरेक्ट स्पीच एंड हो रहा होता है, फुल स्टॉप हमेशा स्पीच मार्क्स के बीच में आता है डायरेक्ट स्पीच के एंड होने पर. एंड द सेम प्रोसीजर इज़ यूज्ड फॉर द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क एज वेल. वी प्लेस्ड देम इनसाइड द स्पीच मार्क्स. होप यू गाइज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ स्पीच मार्क्स यूजिंग डायरेक्ट स्पीच एंड punctuations. Thanks for watching. If it was helpful to you, then hit the like button and don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye bye. Take